Today we've had a very productive day. The main purpose of the visit concluded with a very engaging discussion about the reform measures that the WTO, the World Trade Organization, needs to strengthen its principles, its workings. India made a strong pitch to further strengthen the consensus-based approach at the WTO, the special and differential treatment given to less developed countries and developed countries, bring back focus on issues that have already been finalized, mandated at previous ministerials, address non-tariff barriers that certain countries use to deprive others of market access, take forward necessary action against non-market economies, ensure that we have a strong dispute resolution mechanism at the WTO so that finality can be brought and discipline can be maintained. All in all, the shared concerns of all the ministers were placed before the gathering today, and we have all resolved to collectively work to strengthen the working of the WTO, to ensure the core principles are respected, and work towards global good and global growth in trade. Apart from that, today we had the India-France CEO Forum meeting. We had a business engagement with business persons from France and one of the largest delegations to ever visit France from India, comprising several sectors of mutual interest between France and India. A number of positive initiatives have been discussed with my counterpart ministers in France, the Minister of Economy, the Minister of Trade, and both France and India stand committed to supporting early conclusion of a India-EU free trade agreement and ease of doing business and simplifying regulatory overburden, both at the Commission level and at the state level in France. A very useful visit which will culminate in growth in trade, tourism, art and culture exchanges, as well as investments. Thank you. Sir, WTO is facing an existential crisis in the sense that, the entire set of rules that were decided 30 years ago are being thrown into the bin. So what was the discussion around that? How do you, Well, I think we should not jump to conclusions that an existential crisis has been created. Challenges will come and go, situations will arise. We have to address such challenges, face these situations, and within the ambit of the WTO framework, I'm sure with so many voices on the table, so many experienced ministers giving ideas to resolve the differences that may have cropped up over a period of time, we will certainly find solutions. The WTO now is about 30 years old, and over a period of time, clearly, positions get entrenched. And what we need to do is work with an open mind and unlock
possibilities. Would the dispute settlement mechanism being put in place, should that be the first priority, given that that is the one that was defanged first and that led to the current situation in a way? It's been discussed and decided that we should work on several tracks, one of which is the dispute settlement mechanism, and make an effort to bring back the mojo into the organization. And my own sense is that we all recognize the importance of multilateralism, the importance of the World Trade Organization, and everybody on the room and all the major economies were there represented by their ministers was unanimous in our commitment to strengthen the WTO. What are the other tracks, sir? Well, there is a track on figuring out our agricultural issues, the public stock holding. There is the track on finding solution to address the concerns of overfishing and indiscriminate fishing, which is leading to depletion of fish stock. There are concerns about several joint, the plurilaterals, the JSIs, which some countries believe should be brought within the multilateral framework, while others believe should be allowed to continue, and as long as it doesn't affect the other members' rights and obligations, should be allowed to be brought into WTO for the member states accepting it. So there are different points of view, and we all stand committed to working in a spirit of togetherness and a spirit of accommodation. So the WTO DG, Dr. Mosi said that she has urged India to look or support the China-led investment facilitation proposal. So are we considering to relook at our stand because we oppose that? I have mentioned today in my intervention also that ideally issues that have been mandated at the WTO are within the trade framework should get priority and should be the first issues to be resolved. Issues going beyond trade should not be brought in to create further differences between member states. सर फ्रेंच मिनिस्टर ने बोला था कि 600 से ज़्यादा कंपनी जो है इंडिया में है और उन्होंने फ्रेंच कंपनीज को भी बोला था कि जैसे डिफेंस का रोल मॉडल जो है इंडिया के साथ वो इम्प्लीमेंट करना है और आगे अपने ट्रेड को बढ़ाना है। किस तरह से आप फ्रेंच कंपनीज का अप्रोच देखते हैं, फ्रेंच गवर्नमेंट का अप्रोच देखते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए? बहुत ही सकारात्मक रवैया है फ्रांस के गवर्नमेंट का, फ्रांस के उद्योग जगत का। वो जानते हैं कि भारत में और भारत के नेतृत्व में एक दूरदर्शिता है। भारत अपने आगे आने वाले विकास की यात्रा में तेजी से प्रगति कर रहा है और उस प्रगति का हिस्सा बनना चाहता है फ्रांस और उनका उद्योग जगत। हम भी उनका स्वागत करते हैं। इनके पास कई सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वायु के क्षेत्र में हो, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो। तकनीकी अनुसंधान में भी इन्होंने काफी प्रगति की है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए फ्रांस और भारत के बीच मित्रता भी बढ़े, व्यापार भी बढ़े और आपसी संबंधों को कैसे और मजबूत किया जाए, ये दोनों देशों की प्राथमिकता है। A lot of members are joining the MPIA. What is the EU's take? What did the EU say in the morning? We did not discuss this. Our discussions yesterday with the EU were around the free trade agreement. In the meeting today, one or two members spoke about the MPIA, but there doesn't seem to be very much consensus or any traction to that idea.
I have not heard of any cases getting resolved through the MPI. सर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आपने कहा बातचीत बड़ी सकारात्मक रही, तो कितना आगे हम बढ़ सकते हैं और क्या कुछ डेडलाइन वगैरह हो सकती है? आपने कहा था कि जैसे कुछ हैं चीज़ें हैं जिस पे हमने बात कर ली है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो आपने डिस्कस की? स्पेसिफिक चीजें तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम प्रेस के माध्यम से नहीं चर्चा करते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दोनों तरफ, यूरोपियन यूनियन और भारत, दोनों तरफ आपसी विश्वास है, दोनों तरफ संवेदनशीलता है एक दूसरे के प्रति। जो विषय सेंसिटिव हैं, जिन विषयों पे हमें अपने अपने देशों में राजनीतिक या अन्य कारणों से कोई समस्या हो, उसको हम इज्जत करते हैं। दोनों ने निर्णय लिया है कि एक अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, FTA करेंगे, जो सभी को मौके भी दे, नए अवसर दे व्यापार बढ़ाने के, लेकिन साथ ही साथ किसी के काम में बाधा ना डाले। मुझे लगता है कि इस स्पिरिट में जो बातचीत चल रही है, जो पॉजिटिविटी के साथ बातचीत चल रही है, इसमें जरूर अच्छे आउटकम्स निकलेंगे। सर आपकी बायलेटरल मीटिंग के बारे में बताएंगे सर? EDF से आपने बात करी, आज ATR एयरक्राफ्ट से बात हुई आपकी, रेमो से बात हुई आपकी, क्या क्या बात हुई और किस तरह से वो इंडिया को लेके कई लोग हमने बात करी, बोले कि बड़ा मिनिस्टर ने इनकरेज करा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो ऑलरेडी उनके कई प्लान्स है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। EDF का काफी बड़ा ऊर्जा के क्षेत्र में काम भारत में चल रहा है। EDF के साथ हमने न्यूक्लियर पावर की भी बातचीत की है और उस संबंध में भी प्रगति हो रही है। EDF के पास स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए भी एक उत्सुकता है और भारत भी चाहता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे हम आगे काम करें, अनुसंधान करें, शोध करें, और अगर वो क्षेत्र ठीक चल जाए और उसमें हमें बिजली का दाम ठीक मिले तो उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। जहां तक रेनॉल्ट का बात है, रेनॉल्ट निसान का एक जॉइंट वेंचर था भारत में, जो अब पूरी तरीके से रेनॉल्ट ने ले लिया। उनके आगे चल के काफी एग्रेसिव प्लान्स हैं उसमें उत्पादन बढ़ाने के। आज के दिन शायद 50,000 गाड़ियां बनाते हैं, वो चाहते हैं उसको 5 लाख गाड़ियां तक लेके जाना। साथ ही साथ उनका डिजाइन और इंजीनियरिंग सेंटर एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में भारत में चल रहा है, जिसमें बहुत सारे हमारे युवा युवतियों को रोजगार भी मिला है, हाई पेइंग जॉब्स मिली हैं, और उसमें भी वो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा कोई भी बड़ा उद्योगपति या बड़ी कंपनी का CEO मुझे नहीं मिला जिनके भारत में बहुत बड़े प्लान्स ना हो। और मैं समझता हूं कि जो उत्साह और जो फायदा भी भारत और फ्रांस दोनों को होगा इनके निवेश से, जो नई नौकरियों के अवसर बनेंगे, जिस प्रकार से पूरा इकोसिस्टम में क्रिएट होगा मैन्युफैक्चरिंग का, उसका लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा होगा।